हेलो, नमस्कार, आप सबका स्वागत है। तो आज जो है हम अगले चैप्टर पे पहुंच गए हैं। बुक है रेडर्स इन कश्मीर बाय मेजर जनरल रिटायर्ड मेजर जनरल अकबर खान, और इसके 10th चैप्टर आज़ाद प्लान पर पहुंच चुके हैं। लास्ट टाइम हमने देखा था पुरी के अंदर उनका क्या एक्सपीरियंस था। अब इस बार आज़ाद प्लान क्या है, आज़ाद प्लान्स क्या है, और इसमें ये क्या कहना चाह रहे हैं, इसको हम रीड करेंगे। From Uri, I was called to GHQ Azad. There, a few days later, I met Sardar Ibrahim and his provincial cabinet. I was now also member of the newly formed लिबरेशन कमेटी, यानी कि ये वही सरदार इब्राहिम है जो कि आपको अगर याद होगा कि जो पाकिस्तान गए थे इनसे मिलने, मेजर जनरल अकबर खान से मिलने। तो एक व्यक्ति है, केवल एक व्यक्ति इस पूरी बुक में मुझे दिखा जो कि मेन स्ट्रीम जम्मू कश्मीर से था, जो कि पाकिस्तान के अंदर गया और उससे हेल्प मांगी। अदरवाइज आपको कोई भी ऐसा व्यक्ति इस पूरी बुक में नहीं दिखता। I was now also a member of the newly formed Liberation Committee. At this stage, the committee had to assess the situation somewhat from a distance, and early assessment was necessary to formulate some general policy. To start with, the uprising in Kashmir had been activated only by the need for self-defense and the desire for democratic freedom. It had never meant to strike at any integrity of state. Then the Indian intervention had changed with one stroke the whole character of the struggle. यानी कि इनका कहने का मतलब है कि जो एक्चुअल जो डिजायर थी कश्मीर के अंदर इंटरवेंशन करने की, जो कबायली घुसाए गए थे, वो इसलिए थी कि यहाँ पे कि डेमोक्रेटिक फ्रीडम डिजायर थी। और क्योंकि उनके माइंड में जो पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट है, उनके माइंड में ये था कि ये मुस्लिम मेजोरिटी है तो उसमें हमारा हक होना चाहिए, ठीक है। लेकिन जूनागढ़ पे इनका ये जो हिपोक्रेसी है वो अलग हो गई थी, क्योंकि पाकिस्तान कैरेक्टर में अगर आप देखेंगे, पाकिस्तानी स्टेट में अगर आप देखेंगे, तो आपको ये क्लियरली नजर आता है कि ये बहुत हिपोक्रेट है। जो अपने लिए ये चीजें जो ये डिजाइन करते हैं वो दूसरों के लिए डिजाइन नहीं होती है, या दूसरे जब उनके साथ वैसा ही करते हैं तो इनकी चीखें निकल जाती हैं। लेकिन यहाँ पे ये कह रहे हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर ने इंडिया के साथ एक्सेशन कर लिया, तो फिर जो पूरा पूरा इनका जो प्लान था वही फेल हो गया। It had been like the closing of the door to all those hopes that the people had entertained. Had India sent her army as a neutral force merely to restore peace, leaving the political status of Kashmir strictly untouched, it might have had a different effect. भाई इंडिया क्यों जाएगा? इंडिया कभी भी विदाउट, अगर वो हमारी टेरिटरी नहीं है तो ऐसे इंटरफेरेंस नहीं करती है इंडियन स्टेट। तो ये हमारा कैरेक्टर ही नहीं है फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ ईयर। It might have had a different effect. In that case, even Pakistan might have had to join hands in restoring order, and the people of state themselves might well have seen no further reason for continuing the protest, knowing that the joint forces of India and Pakistan would, on one hand, protect them from the tyranny of Maharaja, and on the other, ensure the possibility of an impartial execution of their wishes. यानी कि impartial भाई, मतलब आप मुझे ये बताइए कि आप लोगों ने यूनिलैटरली वहां पे जो है वो इंटरफेरेंस की, आपने कबाली भेज दिया, आपने अपनी जो आर्मी थी उससे, जो ब्रिटिश आर्मी लीडर्स थे जो उस समय आपके जो पाकिस्तान आर्मी को लीड कर रहे थे, उनको आपने उनको आपने बताए बगैर एक पूरा आपने वो किया, एक तरह से साजिश जिसको ये कहते हैं ना कि हमेशा दूसरे हमारे खिलाफ साजिश करते हैं, आप खुद अपने खिलाफ साजिश करते हो, साजिश की, और फिर आप इम्पार्शियलिटी की उम्मीद कर रहे हैं। मतलब ये किस तरह का एक कंफ्यूज स्टेट है कि आप अपने ही एक्शंस का रिएक्शन नहीं देखते हैं, कि अगर आप किसी तरह के एक्शन करेंगे तो सामने से भी रिएक्शन आएगा। But it had not happened this way, and what the Indian action actually amounted to was, we have brought in our army to of occupation. The Maharaja must continue to rule you, and the state now belongs to India. Even though this blunt and clear import was meant to be somewhat sugar-coated by the promise that after all was quiet and peaceful,
plebiscite would be held. Such a promise could not have taken in even the most simple-minded. The immediate result, therefore, had been that the struggle had changed from protest and demand to desperate effort by individual and areas where it possible to detach them for good from the old state, and thus a disintegration had begun. In the far north, the entire areas of Gilgit, Hunza, Bansi, Esther, etc., comprising approximately 17,500 square miles, had detached themselves at night on 31st October, 4 days after accession. The governor's residence had been surrounded by the Gilgit scouts, and the next morning he had been placed under arrest and a provincial government formed. In other far-fetched areas, the effect had been similar. Even in Buddhist Ladakh, sign of uneasiness had appeared, and from the north area of Skardu, capital of Baltistan, peaceful until then, small bodies of rebel had moved toward the mountain passes of Zojila and Buzil to threaten the Srinagar Valley. यानी कि ये यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो अलग अलग एरिया थे वहां के जो लोग हैं उनको अब वो क्योंकि ऐसा सिचुएशन थी कि लोगों के अंदर कंफ्यूजन भी हो सकती है क्योंकि उस समय पे सोशल मीडिया उतनी नहीं थी, मेन स्ट्रीम मीडिया उतना फैला हुआ नहीं था, टीवी नहीं थे सबके पास कि उनको एकदम से इंफॉर्मेशन मिल जाए, तो कॉमन लोगों को टूटी हुई इंफॉर्मेशन जो मिल रही थी उसके कारण उन्होंने रिएक्शन देना शुरू कर दिया. In the western area of Bagh, the state garrison had been liquidated. Further south, forming the center of the liberation movement, activities had been the most intense. This was the area which had contributed some 80,000 soldiers to the British Indian Army during the World War, and now here had arisen the largest force for the liberation. Here also more tribesmen had joined them, tourists from the Khurram, a Lashkar from Dheer, Zardans, even Tajiks from Afghanistan, Gilzais, perhaps forming the largest part. Here, the Diris had fought a most gallant action when they had charged an Indian unit with the sword and practically wiped it out. Thus, most of the separate posts in this area had been liquidated. Mendhar, Kotli, Rajouri were now all in Azad hands. Azad hands यानी कि जो so called Azad Kashmir है वो कंट्रोल कर लिया था. Meanwhile, more Indian troops had continued to arrive in Kashmir. At Srinagar, the force had increased from a brigade to a division. From Jammu, another brigade had started moving westward along the road of Nashera and Mirpur, and it was obvious that India would go on increasing her strength, and this increasing threat would have to be met. Our task, therefore, was to coordinate the effort of scattered Azad element as soon as possible. It was now contemplated that we could throw India out of Kashmir. All we had to do was to make sure that India did not crush the movement. As a first step in this direction, enough resources would have to be gathered to sustain the struggle for a period of 3 months to start with, by which time it was felt the problem would have become internationally recognized and the United Nations might intervene. But to maintain the struggle for 3 months brought up the problem of ammunition. Already more than 10,000 Indian troops had come into the state. बहुत important point है कि इनका mainly ये इनके दिमाग में था कि अगर हम 3 महीने तक स्ट्रगल जारी रखते हैं तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये इंटरनेशनल लेवल पे जाएगा और यूएन के अंदर चला जाएगा, क्योंकि यूएन उस समय नया नया बना था तो उसकी एक रिट भी थी, उसके पास पावर भी थी. उसको आज के हिसाब से आप मतलब मत सोचिएगा कि आज के हिसाब से वो चीजें होंगी. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनका बेसिक ये था कि हम 3 महीने तक इसको अगर स्ट्रगल को या कॉन्फ्लिक्ट है इसको 3 महीने तक लंबा खींच दें तो उससे क्या होगा कि जो यूनाइटेड नेशन है वो इंटरवीन कर सकता है. और अगर यूनाइटेड नेशन इंटरवीन करेगा तो एज अ पाकिस्तानी उनके ब्रेन में था कि जो मुस्लिम है वो पाकिस्तान की साइड ही आएंगे, क्योंकि मुस्लिम मेजोरिटी कश्मीर है तो वो पाकिस्तान की तरफ ही वोट करेंगे. जबकि इस बुक में बार बार
शेख अब्दुल्ला का नाम आया है। और शेख अब्दुल्ला जो है वो उस समय, चाहे अब उनके बारे में हम कुछ भी बोले, लेकिन वो उस समय जम्मू कश्मीर के मुस्लिम्स की, मेजॉरिटी मुस्लिम्स के लीडरशिप, मतलब एक रिकॉग्नाइज्ड लीडर थे। और वो प्रो इंडिया थे, उनका नेहरू की तरफ थोड़ा इंक्लिनेशन था, इससे हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। तो लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनके लिए थी कि अगर 3 महीने तक कंटिन्यू करना तो एम्यूनेशन तो चाहिए, क्योंकि इंडियन आर्मी जो है उस समय पे ऑब्वियसली के स्कैटर्ड लोगों की, या ये जो कबायली थे, या जो कॉमन लोग जिनको मे भी रिलीजन के नाम पे खड़ा कर दिया गया था, तो उनको वो स्टेट के साथ तो पंगा नहीं ले सकते थे ना, आर्मी के साथ तो वह डायरेक्ट पंगा नहीं ले सकते थे। It was expected that they would increase up to 30 or 40,000 very soon. To prevent them from crushing the liberation movement, there would have to be about 10,000 armed men on our side. There was no shortage of men, but there was shortage of rifles. Therefore, the figure of 10,000 would be about the maximum that could be ever achieved, including everybody. If each man spent only 100 rounds of ammunition per month, it would amount to 3 million rounds for the 3 months. While at the moment all that exists in sight was about a fifth of 1 million. Thus, at our level in planning the future operation, there was no choice but to confine action to snippet and ambitious, etc. And this inevitable restriction was to continue throughout the struggle. In connection with ammunition, the tribesmen came in for heavy accusations. The complaint was that they took most of their ammunition back out of Kashmir. There was, of course, truth in this, but we had no mean of stopping it. And all the allegation was, in fact, not as bad as looked on the face of it. The tribesmen had no pay or any source of income other than the sale of what they captured from the enemy or the ammunition they got here. At least some portion of it was certainly used against the enemy, and with this they achieved result which was satisfactory. यानी कि जो ट्राइबल्स मैन थे, जो कबायली थे, वो उनके पास कुछ नहीं था ना, मतलब वो कोई इनकम तो ले नहीं रहे थे, और ना ही उनको कोई पाकिस्तान की तरफ से पैसे मिल रहे थे। वो तो रिलीजन के चूरन पे आए हुए थे। तो उनके पास क्या था कि वहां से जो लूटा था, और यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे कन्फेशन भी आता है कि जो कबायली थे उन्होंने कश्मीरी मुस्लिम्स को भी लूटा था। अगर यहाँ पे कोई कहे ना, इवन कश्मीरी क्रिश्चियंस को भी, जो वहां पे जो मिशनरीज के हॉस्पिटल थे, जो वहां पे स्कूल्स थे, मिशनरी जो क्रिश्चियन स्कूल्स थे, उनको भी लूट लिया गया था। वहां से फीमेल्स को उठाकर ले गए थे वो। अब मैं इसके बारे में अगर आप रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा। और उनको जाकर बेचा गया था एज अ सेक्स स्लेव। और जब मैं फीमेल्स को उठाया गया था, ये नहीं कह रही हूँ कि केवल नॉन मुस्लिम्स को, इवन मुस्लिम फीमेल्स को भी उठाया गया था। My impression was that for the same quantity of ammunition given to tribesmen and regular soldiers, the tribesmen got equal, if not better result, even allowing for what they sold. यानी कि वो ये कह रहे थे कि अगर उसी क्वांटिटी में एम्यूनेशन अगर ट्राइबल्समैन को दे दिया जाए जो कि रेगुलर सोल्जर को मिलता है, तो फिर अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। If regular soldiers inflicted one casualty per 100 rounds expended, it would normally be considered a good average. Indeed, in the past two world wars, for most armies, the average expenditure for one casualty inflicted was not one, but several hundred rounds. The tribesman, on the other hand, usually fired from such close range and with such care that he often inflicted one casualty for only a small portion of 100 rounds. If then he saved the rest for himself, we were in fact losing nothing thereby. यानी कि ये यहाँ पे कह रहे थे कि जो ट्राइबल्स मैन है, क्योंकि वो ट्रेंड नहीं होते हैं, तो वो पास जाके मारते थे, ताकि वो उनके जो प्रोपोर्शन था कि कितने राउंड्स फायर करने के बाद वो कैजुअलिटी करेंगे, वो कम था एज कंपेयर टू रेगुलर सोल्जर के। Some months later, I was able to confirm my impression was actual fact. 500 tribesmen and 500 regulars used approximately the same quantity of ammunition over a period of 3 months, and the casualty inflicted were about equal. Next to ammunition, there was one other important limitation which also
also had to be accepted. Per, 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 Perforce, the Azad operation would have to be of somewhat disjoint in nature. It was not possible to have or to enforce any specific overall strategy. To pursue any specific plan would involve the movement of resource meant for strategy purpose, but one such thing could be done because there was no central reserve of arm, ammunition, or food to divert to particular front, or nor could the men be shifted from one place to another. They were defending their own homes in their own area and were feeding themselves locally. This everywhere, the strength and the local situation varied from day to day. There was no possibility of weakening one place to strengthening other, such as would normally be necessary in pursuit of some general plan. The only mobile element that could theoretically be used was the tribesmen, but they could be so used only for a short duration because they could be put into particular area to start with, but thereafter they were their own master and they often infiltrate far and away into other area wherever they found suitable target. यानी कि ट्राइबल्समैन को एक तरह से यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जो जो ट्राइबल्समैन है उनको उनका जो प्रोसीजर है वो बड़ा ही मिसमैच होता है. एक रेगुलर आर्मी जो है वो ट्रेंड होती है, उनको पता होता है कि हमें एक पर्टिकुलर एरिया में किस तरह से, उनके अंदर पेशेंस भी होती है एक रेगुलर आर्मी में, बल्कि ट्राइबल्समैन में उतनी पेशेंस नहीं होती है. वो अपनी मर्जी का मालिक है. मे बी आप उसको उनको कुछ टाइम के लिए आपने रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू से एक तरह से वो है वो कर दिया, आपने उनको जो है वो मोटिवेट कर दिया, लेकिन अल्टीमेटली वो करेगा वही जो उसके दिमाग में है. In general, therefore, we would have to content simply with maintenance of the struggle, and the maintenance itself would require a great ideal of organizing, and this organizing would have to be done mostly by Liberation Committee and by GHQ Azad. यानी कि GHQ Azad और जो लिबरेशन कमेटी है उनकी तरफ से ऑर्गेनाइजिंग होनी थी इन लोगों की जो ट्राइबल्समैन थे, अदरवाइज तो कुछ नहीं हो सकता था. यहाँ पे ये चैप्टर खत्म होता है. थैंक यू सो मच सबका जुड़ने के लिए. आई होप कि आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा होगा इस किताब के बारे में, और इस किताब से आपको अंडरस्टैंडिंग मिलेगी एक पाकिस्तानी माइंडसेट की. तो थैंक यू सो मच सबका जुड़ने के लिए. धन्यवाद. जय हिंद, जय श्री राम.